Hello dear students, hope you all are doing well. So dear students, as you know, our biosphere is contained with both living and non-living things. And in today's class, we are going to discuss, we are going to know, we are going to learn about tiny living things. About living things, those are very tiny in shape. Okay, those are very tiny in shapes and having special characteristic. So dear students, as you know, the world is full of living things that are very small in size and they cannot be seen with naked eyes. To observe this type of living things, we need the help of microscope. Such living things are called microorganisms. Microorganisms are the compound word. Micro means very tiny in size, very small in size. Organism means living things. So those organisms which are very tiny in shapes and they cannot be seen with naked eyes. To see them we need the help of microscopes. So this type of living things or this type of organisms are known as microorganisms. So before discussing further, we need to know where these microorganisms are found. Dear students, these microorganisms are found everywhere in nature, like in air, in water and in soil. They are also found on the surface of every object, even the surface of living bodies. They are also found inside the body of animals or human. They are also found inside the dead organic matter. Okay. There are number of microorganisms present in the biosphere. Among all these, some microorganisms are harmless. Some microorganisms are useful to human, to animal, and some organisms are very harmful. They are causing of diseases. Okay. Such microorganisms are called germs. हमारे वातावरण में बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स देखने को मिलती है और ये सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स में से कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म बिल्कुल हानि नहीं पहुंचाती है, हार्मलेस. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म आर वेरी यूजफुल टू ह्यूमन और एनिमल्स. बहुत ही उपयोगी, बहुत ही मददगार होते हैं ह्यूमन और एनिमल्स के लिए. और कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म से जो कि बीमारियां फैलाते हैं. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैलाती हैं जिसको जर्म्स कहा जाता है. जर्म्स यानी कि कीटाणु, जिन्हें जर्म्स कहा जाता है. इन बायोलॉजी दे आर टर्म्ड एज पैथोजेंस. So disease causing microorganisms are called pathogens. One more thing students you should know, these microorganisms are in 5 groups. ये जो microorganisms है, ये microorganism की 5 groups होती हैं. Okay, first group is known as bacteria. Bacteria is a microorganism. Second, fungi. Third, algae. Fourth, protozoa. And the fifth, viruses. Okay. So bacteria, fungi, algae, protozoa and viruses. They are the different type of microorganisms. Okay. So if we will talk about bacteria are unicellular microorganisms. Unicellular means those organisms having single cell called unicellular. So bacteria are
unicellular microorganisms. Bacteria are unicellular microorganisms. Generally, they are found in three shapes. Bacteria are found in three shapes. They are rod shape, spherical shape, and spiral shape. So students, to know more about bacteria, they are the larger microorganisms. They are larger than viruses. These microorganisms are unicellular. Bacteria are unicellular. Unicellular means those organisms are having single cell called unicellular. Okay. So bacteria are unicellular microorganisms. They are found in three shapes. Bacteria are found in three shapes. Bacteria जो है वो तीन शेप के होते हैं. What are the three shapes? What are those three shapes in bacteria? One is rod shapes. Okay, one type of shape is called rod shape. Rod shapes generally like this type. Okay, बैक्टीरिया जो है वो तीन अलग अलग आकार के पाया जाता है. पहला है रॉड शेप. सेकेंड वन इज नोन एज स्फेरिकल शेप. Spherical shapes. Spherical shapes mean in circle like this. Okay. And the third shape are known as spiral shape. Spiral shape like this. Okay. So, there are 5 groups of microorganisms in nature. First, bacteria. Second, fungi. Third, algae. Fourth, protozoa. And fifth one is viruses. If we are talking about bacteria, bacteria are of unicellular. Bacteria are unicellular microorganisms. Second, they are found in three shapes: rod shapes, spherical shapes, and spiral shape. Okay. Now let us discuss about the second type of microorganism. The second type of microorganisms are known as fungi. The second type of microorganisms are known as fungi. Okay. So what are the specialty of these fungi? They are both in unicellular and multicellular. फंगी जो है वो यूनिसेलुलर भी होती हैं और मल्टीसेलुलर भी होती हैं. एंड दे फीड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. फंगी जो है वो सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रह के अपना भोजन करती हैं. और ऑन और इन आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. फंगी आर unicellular or maybe multicellular. Okay, fungi may be unicellular or maybe multicellular. While talking about the food habit of fungi, how they are eaten, okay, what they are eating, then they feed on decaying organic matter. Fungi are feed on decaying
फंगी यूनिसेलुलर भी होती हैं और मल्टीसेलुलर भी होती हैं। और फंगी क्या खाती हैं? फंगी जो है सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर खाती हैं। ओके, दे फीड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। और उसके साथ साथ फंगी क्या खाती है? दे feed on or in the body of living organism. Feed on or in the body of living ओके। यानी कि फंगी जो होती है, फंगी सड़े हुए चीज़ों को खाती है या तो फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर या शरीर के बाहर नहीं रह के वो अपना भोजन करती है। सो फंगिस आर सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट बोथ। फंगी जो है वो सेप्रोफाइट भी होती है और पैरासाइट भी होती है। सेप्रोफाइट हम किसे कहेंगे? जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन करता है उसको हम लोग सेप्रोफाइट कहते हैं। एंड पैरासाइट हम किसे कहते हैं? जो किसी दूसरे लिविंग बॉडी में रह के अपना भोजन करता है उसे हम लोग पैरासाइट कहते हैं। गॉट क्लियर? सो वी न्यू अबाउट टू टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट वन वाज बैक्टीरिया, दे आर यूनिसेलुलर, एंड सेकंड वन इज fungi, they are both unicellular and multicellular. Bacteria are of three shapes: rod shape, spiral shape and spherical shape. And fungi feed on the decaying organic matters or on or in the body of living organism. The third living microorganism is अल्गे। जो तीसरे प्रकार के माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसे हम लोग अल्गे कहते हैं। अल्गे आर ऑल्सो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर इन नेचर। अल्गे भी जो है वो फंगी की तरह यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते हैं नेचर में। ओके, सेकेंड थिंग, दे आर ग्रीन ऑर्गेनिजम्स। अल्गेस आर ग्रीन ऑर्गेनिजम्स। अल्गे आर ग्रीन ऑर्गेनिजम्स, सो दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। अलगे जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, इस वजह से अलगे अपने लिए भोजन खुद बना सकते हैं। दे आर हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग फूड। अलगे आर हैविंग कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग फूड एंड दे लिव इन वाटर। दे लिव इन वाटर। Whenever you will visit to a pond or to a river, you might be seeing some green color algae are present at the bank of the pond or river. अगर आप कभी नदी गए हो या तालाब गए हो या कहीं पे पानी बराबर गिर रहा है जिस जगह पे, वो जगह में क्या है, वो जगह में धीरे धीरे एक ग्रीन कलर की कुछ चीज़ें जम जाती हैं, ग्रीन कलर की, जिसमें फिसलन होने लगती है। दे आर अलगे, दे आर ग्रीन इन कलर। ओके, सो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ अलगे? अलगे आर बोथ यूनिसेल और मल्टीसेल, है ना। अलगे जो है वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। दे आर फाउंड इनसाइड द वाटर, दे आर फाउंड इन द वाटर एंड अलगे आर हैविंग कैपेबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे आर ग्रीन इन कलर। अलगे जो है वो ग्रीन इन कलर के हैं, इसलिए अलगे के पास कैपेबिलिटी है अपने लिए भोजन बनाने का। अंडरस्टूड? द फोर्थ टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर प्रोटोजोआ। Protozoa are the fourth type of microorganisms. Like bacteria, protozoa are also unicellular. बैक्टीरिया की तरह प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ भी यूनिसेलुलर होते हैं। ओके, एंड दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेंस दे आर हेटेरोट्रॉफ, दे डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर देयर फूड।
ये जो प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ एटोट्रॉफ है, क्योंकि प्रोटोजोआ अलगे की तरह अपने लिए भोजन नहीं बना सकता है, वो अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेबल रहते हैं। ओके, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड एंड दे आर यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया की तरह प्रोटोजोआ भी यूनिसेलुलर है। एंड नाउ द मोस्ट microorganism, they are known viruses। जब आप देख रहे हो वायरसेस के बारे में, ठीक है, वायरस के बारे में आप देख रहे हो, तो ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे अभी हमारे देश में जो पेंडेमिक चली है, कोरोना, व्हाट इज कोरोना? दैट इज वायरस। जनरली दीज वायरसेस आर वेरी हार्मफुल। जनरली ये वायरस जो है ये बहुत हार्मफुल होते हैं, ठीक है, नुकसानदायक होते हैं। ये भी एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है, और सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से इनकी साइज सबसे छोटी है। दे आर द टिनिएस्ट among other microorganisms, among all microorganisms, and they don't have cell। The special thing, they don't have cell। जो सबसे छोटे होते हैं उन लोगों के पास सिंगल सेल है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग के शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स को डिफरेंट वर्क करती हैं, इसलिए हमारी बॉडी में मेनी सेल्स, आवर बॉडी इज हैविंग मेनी सेल्स, और वी कैन से वी आर मल्टी सेलुलर। हम लोग जो है वो मल्टी सेलुलर है, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यूनिसेल, फिर भी इनको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं। लेकिन सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो है वायरसेस। इनका सेल ही नहीं है, इनका सेल ही नहीं है। ओके, दे आर नॉट सेल्स एंड डोंट कंसिस्ट सेल ऑर्गेनेल्स। इनका ना तो सेल है ना तो सेल ऑर्गेनेल्स है। इनके पास क्या है? दे आर मेड ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट। These viruses are made with genetic matters, okay, genetic materials, and coated with protein coat, okay, coated with protein coat। And the special thing about viruses, ये वायरस के बारे में हम लोगों को अगर जानना है तो ये वायरस हमें कहाँ देखने को मिलती है, किस प्रकार से ये होती है। ओके, so let us know more about the viruses। Viruses are the tiniest among other microorganisms। They cannot multiply on their own। ये वायरसेस जो है ये अपने आप में ही बढ़ते नहीं हैं, अपने आप में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। अपना मतलब जो रिप्रोडक्शन है, अपना जो मल्टीप्लिकेशन से अपना जो मल्टीप्लाई है, ये वायरस स्वयं नहीं कर सकते हैं। टू मल्टीप्लाई दे नीड द हेल्प ऑफ a body to multiply। When these viruses need to multiply, they need to enter in a body of living thing। ये वायरस ऐसे ही मतलब एटमॉस्फेयर में, यानी कि अगर एटमॉस्फेयर में रहेगा, पानी में रहेगा या सॉइल में रहेगा तो ये वायरस फैलती नहीं है। ये वायरस फैलने के लिए किसी के बॉडी के अंदर जाना जरूरी होती है वायरस को, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो अदर ऑर्गेनिजम्स हो, है ना। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो कि कोरोना फैली है। कोरोना अगर बाहर रहती है तो वो कोई हानि नहीं करती, वो जब हमारे शरीर के अंदर आती है तब नुकसानदायक होती है ना। तो ये जो वायरस जो है, ये वायरस अपने आप मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। इट डोंट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लाई विथ इट ओन। इट नीड टू एंटर अ लिविंग बॉडी। ये एक लिविंग बॉडी के अंदर एंटर होती है, और जैसे ही वो किसी के बॉडी के अंदर एंटर होती है वैसे ही वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होती है। इट डजंट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। ये जो वायरस है, वायरस का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है, कोई भी विशेषता नहीं होती है। जैसे हम लोगों का विशेषता है,
हम लोग छोटे से बड़े बढ़ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हम लोग भोजन करते हैं, हम लोग रेस्पॉन्स टू स्टिमुली करते हैं, लेकिन ये वायरस का ऐसा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। दे डोंट फीड, रेस्पायर, एक्सटेंड, ग्रो और मल्टीप्लाई। अंडरस्टूड अबाउट वायरस? So dear students, in today's class we saw what are microorganisms. Microorganisms क्या है, और ये microorganisms के 5 ग्रुप्स के बारे में हम लोगों ने देखा। 5 ग्रुप में बैक्टीरिया, फंगी, अलगे, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो ये यूनिसेलुलर है और ये 3 शेप के होते हैं, रॉड शेप, स्पेरिकल शेप एंड स्पाइरल शेप। अगर फंगी की बात अगर हम लोग करें तो ये फंगी यूनिसेलुलर भी होती हैं और मल्टीसेलुलर भी पाई जाती हैं। फंगी क्या खाती है? फंगी फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर है उनको फंगी खाती हैं। या तो फिर ये किसी भी लिविंग थिंग के शरीर के अंदर या शरीर के बाहर, शरीर में रह के अपना भोजन बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत लोगों को फंगल इन्फेक्शन होता है, खुजली उजली होता है, देखते देखते वाइट वाइट हो जाता है, ठीक है। व्हाट आर दे? दे आर द फंगी हु आर फीड ऑन आवर बॉडी। ओके। थर्ड टाइप ऑफ लिविंग थिंग, थर्ड टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो आते हैं अलगे। ओके, अलगे आर ऑल्सो बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अलगे जो है वो यूनिसेलुलर भी होती हैं और मल्टीसेलुलर भी होती हैं। दे आर, अलगे जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, जिस वजह से कि अलगे के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो अपना भोजन स्वयं बना सके। और अलगे जो है वो हमेशा पानी के पास देखने को मिलती है, पानी में देखने को मिलती है। फोर्थ टाइप ऑफ लिविंग थिंग, फोर्थ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी बैक्टीरिया की तरह एक ही सेल से बनी हुई रहती है, सिंगल सेल का बना हुआ रहता है, इसलिए उसको यूनिसेलुलर कहते हैं। और प्रोटोजोआ जो है वो हार्मफुल नहीं है। प्रोटोजोआ जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती है, इसलिए प्रोटोजोआ अपना भोजन के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करती है। एंड द फिफ्थ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वायरसेस। जनरली दिस वायरसेस आर हार्मफुल। ये वायरस जो है ये हार्मफुल होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये वायरस के अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं है जो कि लिविंग थिंग के अंदर होती है। वायरस अपने आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, अपने आप बढ़ नहीं सकती जब तक उसको एक लिविंग बॉडी नहीं मिलती है। वायरस फैलने के लिए एक लिविंग बॉडी के अंदर जाना जरूरी होती है वायरस को। वायरस जब किसी के बॉडी के अंदर जाती है तब वायरस बहुत तेजी से फैलती है, और बाकी लिविंग थिंग के जैसा इनका कोई फीचर्स नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी केम टू नो अबाउट microorganisms, different group of microorganisms, where they are found. Okay, so here are some questions. First one, what are microorganisms? Second, where are microorganisms found? Third, write the detail, write about all microorganisms. हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिटेल में आपको लिखना है. If you have any confusion, any doubt, you can comment me, or you can ask me in my group, or you can ask me on my YouTube channel. Okay, so that is all for today, and we'll meet once again. Okay, so till that time, stay calm, stay healthy, and have a good day.